नमस्कार देवियों सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका हमारे उन्मेष के दूसरे दिन के दोपहर के भोजन के बाद के हमारे इस सत्र में, जो कि केंद्रित है भारतीय नाटकों में अलगाव की भावना यानी एलिनेशन इफेक्ट इन इंडियन प्लेस। हिंदी में अलगाव शब्द उपयुक्त है या इसका और कोई बेहतर विकल्प हो सकता है, ये आप बेहतर समझते हैं, लेकिन इस चर्चा को और इस चर्चा के विभिन्न बिंदुओं को आपके समक्ष रखने के लिए और हमारे ज्ञान को वर्धन करने के लिए, ज्ञान से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि विवेक हमारा बढ़े, बुद्धि बढ़े, विजडम थिएटर को लेकर एक हमारे अंदर पैदा हो सके, ये सेशन उस नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें इस देश के बहुत ही प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाटककार और रंगकर्मी हमारे साथ इस सत्र में शामिल हैं और इसलिए अब उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। आदरणीय महेश दत्तानी साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और साथ ही अंजला महर्षि जी, अस्कर वजाहत साहब, उनसे भी गुजारिश है, डॉक्टर आतिमजीत, विजय कुमार शतपति जी, देवाशीष मजुमदार जी और वामन केंद्रे जी, आपसे भी निवेदन है कि आप सभी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तालियां आप सबकी तरफ से। हमारे बहुत सारे युवा दोस्त इस सेशन में हैं जो थिएटर से, रंगकर्म से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक बहुत प्रेरक सत्र होने जा रहा है और वे बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं इस सत्र की शुरुआत की। तो मैं महेश जी, बिल्कुल सेंटर की चेयर आपकी है, क्योंकि इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए हमने आपसे निवेदन किया है, तो आप विराजें और बाकी सभी से भी निवेदन है आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें इस सत्र में। नहीं, आप बैठे सर, चेयर है। देवी सज्जनों, जैसे कि हम जानते हैं कि इस सत्र की अध्यक्षता के लिए, इसको चेयर करने के लिए हमने महेश दत्तानी साहब से निवेदन किया है। तो महेश दत्तानी साहब का हमारे सभी बहुत ही प्रख्यात प्रतिष्ठित नाटककारों रंगकर्मियों का अभिनंदन, स्वागत साहित्य अकादमी की तरफ से। और चूँकि महेश जी बारी बारी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अध्यक्षता करते हुए, लेकिन महेश जी के बारे में ज़रूर मैं वो परिचय बाकी सबका तो देंगे, लेकिन महेश जी के बारे में उनके जो परिचय के कुछ शब्द हैं जो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके सामने रख सकूं, वो मैं रखता हूं। क्योंकि एक प्रख्यात नाटककार के रूप में, रंगमंच निर्देशक के रूप में और परामर्शदाता के रूप में आपकी प्रतिष्ठा और आपके प्रति आदर भाव हम सबके मन में है। आपके नाटकों का देश तथा विदेशों में कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और उसका मंचन भी हो चुका है। आपका एक संकलन है फाइनल सॉल्यूशंस एंड अदर प्लेस, जिसके लिए आपको प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया जा चुका है। और हाल ही में आपने न्यूयॉर्क में दिस इज़ नॉट अ थिएटर कंपनी का नाम है ये, दिस इज़ नॉट अ थिएटर कंपनी के साथ एक ऑडियो पीस अ लिटिल ड्रॉप ऑफ हेवन के लेखन और निर्देशन का भी कार्य किया है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा न्यूयॉर्क में प्रकाशित होने योग्य 5 कृतियों में से एक माना गया है। इस तरह से, और प्ले पेन परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रस्ट के कला निदेशक हैं तो आप सब जानती हैं, तो एक बार आपकी करतल ध्वनि के साथ महेश दत्तानी जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अध्यक्षता के लिए गुजारिश, निवेदन, और निवेदन करूंगा कि इस सत्र का शुभारंभ करें। बाकी सबके परिचय के साथ वो उनको आमंत्रित करते रहेंगे और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। महेश जी प्लीज़। Thank you very much for that kind introduction. Now, we're extremely fortunate to have this panel here today because we're looking at the country's greatest minds, full of ideas, full of practice. We have writers, we have directors, we have film actors as well amongst us, and people who have done solo performances, people who have written criticisms on theatre, especially the alienation effect, which Anjala ji has written a book on this very subject. So I think we're very fortunate to have an academician like her. And I'm going to introduce each panel as I request them to come and speak, because that way you will have a better context to what they're saying. So I'm just going to start off by a sort of preamble, because again, alienation effect
what does it mean? Why does anyone want to alienate their audience, right? So this term, which in German is Weltfremdung effect, that's what it's called, is attributed to Bertolt Brecht, but he didn't invent it, he coined the term. The power of packaging, right? Because now we associate that term with Bertolt Brecht. So what exactly is this, and why did he have the need for something like this? Brecht was born in Germany, and he grew up at a time when the world faced a war, the First World War. And in his school, when he was in school, probably at 14 or 15, he wrote an essay in which he said, all war is propaganda. And anyone who sees through that propaganda will not want to die for their country. As you can see, that was a very controversial remark made by a schoolboy, and he was almost expelled from school for that. It is my belief that the rejection of that schoolboy's essay led to the birth of Bertolt Brecht, the poet, the playwright, the thinker, the activist, the dramatist. I could see that as a point of departure from him. But of course, he was also influenced or informed, I would say, rather than influenced, by the work of Erwin Piscator, with whom he worked with. And they formed a theater which was termed at some point documentary theater. It had a very, very powerful social voice, and it spoke to the oppressed masses at that time. So I would imagine that that's where his ideology came from. Now, when Bertolt Brecht became this dramatist, as we know him to be, with his work, with his company, the Berlin Ensemble, he was very clear that he did not want his audiences to be so caught up in the reality of the fiction, the fictional characters on stage, that he felt that was very poor theater. That if I lose myself completely in what's going on and say, what's going to happen now? Oh my God, you know, she's good. Oh my God, what the poor thing, right? It may raise my sympathy for the characters, but it provides me an escape from my own social reality and into the social reality that is fictional on stage. So he was very particular that he wanted both, actually. So he formulated devices in his theater, which we now understand it to be what he called the Weltfremdung effect, which loosely, it's been translated as the alienation effect, but there are many critics who disagree with that translation and feel that it's more of a distancing rather than an alienation. So sometimes it's called the distancing effect, and also sometimes psychological distancing, because you're not alienating the audience, they're not leaving the auditorium, you're not pushing them out of the auditorium. You're giving them an interesting presentation, but at the same time pushing them a little bit by saying, hang on, this is interesting, watch it, but also can you connect it to what's going on in your life? So he was more interested in the why rather than the what. So he didn't want audiences to think what's going on or what's going to happen next. He wanted them to question, why is this happening? And that is what differentiated him from many of the European practitioners who most theater following the Aristotelian dramatic structure would create plays where you succumbed to the charm of the aesthetics on stage and the illusion it created of reality. And this was a counter, it was antithetical to that kind of theater. How did he do that? It's very interesting and so familiar to all of us, is that he used gestures with what he called gestus
right? Now the gestures were not expressive gestures, but impressive, in the sense they impressed upon the audiences who the character is. So there would be archetypal gestures of dominance, of action, which then suggested the character. Very often you see mother courage in this kind of a pose, very forward, very determined. I'm going to survive in spite of the war, right? And even the most emotional part of the story, when she loses her child, it's not an expressive scream. It's a silent, impressionistic scream. You just get the gesture of the scream, but you don't hear it, right? So that was one technique. Then he had very bright lights. He wanted all the scaffolding of the theater, whatever, and sometimes even the people providing sound effects were on stage, right? So this whole thing of the fourth wall, the imaginary fourth wall, was broken for him, right? Now, and of course he used music, and he used what we call epic theatre, very sort of loosely connected scenes, and not honoring the unities, especially of time, that Aristotle's dramatic structure followed. He also had his performances in the round or in three. So as audiences, you would have audiences seated on the opposite. So you see audiences. So in a sense, you're seeing yourself watching the play, right? Now, how unfamiliar is this to our theatre? We've never had this problem of the fourth wall. I don't think we've ever had this concept of an imaginary fourth wall where the actors pretend that they don't see the audience. And so the audience pretends or suspends their disbelief that what they're watching is very, very real and very, very private, and they feel privileged to be a part of it. We've never had that. So what does the alienation effect mean in our theatre? I think it requires just formulating, because it exists. It's always existed. It continues to exist. It's nothing new. And the question which it would be nice if the panelists also answer is that how are we using this distancing effect, which is so, it's in our blood. It is part of our theatre, whether you look at Sanskrit theatre or whether you look at contemporary Indian theatre. If you just let alone the sort of very rarefied cantonment English theatre, which unfortunately I'm a part of. But if you just ignore that, then I think you will get a wealth of theatrical conventions and truisms in the artistic sense. Even the very fact of rasa, which is an aesthetic experience, that the emotion an audience feels is not necessarily the emotions that the actors are going through, right? That there is, even if you feel karuna, even if you feel raudra or something, it still has an aesthetic quality to it. It's not connected with what we call real emotions. This real emotions in the theatre is an illusion. It doesn't exist. Even in the realistic theatre, realism is also a convention in the theatre. It's not realism versus stylistic theatre. Realism is a style by itself. Right? So without further ado, I would first like to call Anjali ji. Sir, sorry for interruption. Just 1 minute I will take in between. Before we invite the first speaker, I will request Dr. K. Srinivas Rao ji, Secretary, Sahitya Academy, just to come on stage and felicitate the dignitaries, eminent personalities from theatre. सबसे पहले महेश दत्तानी साहब जो चेयर कर रहे हैं इस सेशन को, उन्हें अंगवस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन। और क्योंकि राव साहब को एक्चुअली चूँकि 4-5 वेन्यूज़ में प्रोग्राम चल रहे हैं, Alienation effect. Thank you very much. अंजला महेश जी, उनकी उपस्थिति हम सबके बीच, उनके इस फील्ड में भी बहुत योगदान है उनका। आउटलुक ने, मैगजीन ने देश के जो सबसे शीर्ष नाटककार 10 चुने, उसमें असगर बजाहत साहब, ऐसे लोकप्रिय नाटककार असगर बजाहत साहब,
डॉक्टर आतिमजीत जी, जिन्होंने पंजाबी थिएटर के माध्यम से देश और दुनिया में इस थिएटर को एक पहचान दी है, देश में भी और देश के बाहर भी। और बामन केंद्रे जी, आप जानते ही हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर रहे और इस क्षेत्र में उनका वर्षों का योगदान और लगातार जो निरंतरता उनकी है इस काम को लेकर क्षेत्र में, वो बहुत अद्भुत है। देवाशीष मजुमदार साहब, वे भी हमारे इस पैनल का हिस्सा हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और विजय कुमार शतपथे जी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सत्र में। और चलिए, मैं आई एम सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, बट महेशी नाउ प्लीज कैरी ऑन सर। थैंक यू वेरी मच। Now, Angela ji's thoughts are important because I don't know, pardon me for saying it, but perhaps she is the most qualified amongst us to talk about the alienation effect, because that's part of her study. Not only that, she is a practicing dancer. You practice Bharatnatyam and Odissi, right? So I would request you to feel free to speak on whatever you're prepared, that's fine. And would you like to stand or would you like the mic? Okay. थैंक यू महेश जी। ये मेरा सब्जेक्ट रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अगर बोलना शुरू करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो टाइम का कांस्टेंट भी है, तो इसलिए मैंने लिख कर ही लाई हूँ और आप देखिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स, we are here to discuss whether Indian plays have element of alienation effect as developed in the epic theatre of Bertolt Brecht. To have a fruitful discussion on the subject, it is important to understand the connotations of these two words, epic and alienation. In India, we understand the word epic as a long monumental poetry. Ramayana, Mahabharata, the two epics are an important part of our great heritage. Innumerable stories from Ramayana and Mahabharata have inspired the playwrights of ancient times. Classical Sanskrit theatre believed in telling a story. Without any prop or set, the actor in Bhana is one of the 10 Rupakas as described in Natya Shastra, जहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी खड़ा होता है और सब वो एक्ट करता है, बातें करता है. Without any proper set, the actor in Bhana could entertain his audience by giving a detailed description of a market full of goods, flowers, clothes, and eatables. He himself believes in his surroundings and then makes people believe in him. The traditional theatre forms like Bhavai, Tamasha, Nautanki, the byproducts of Sanskrit theatre, continue to enjoy this freedom of playing with space and time. In Europe, epic is understood as an Aristotelian term for a form of narrative which is not tied to time, as against the tragedy that is bound by the unities of times, place, and action. In German language, epic is a particular narrative form. Brecht's strong dislike for the orthodox naturalistic theatre helped him to develop a new kind of language which would negate realism, in the first place, and tell a story that would entertain and educate the audience about the times they were living in. To make his theatre interesting, Brecht borrowed the theatrical devices from his predecessors. The chorus of Greek tragedy, the hero-based plays of Shakespeare, the docudrama of Erwin Piscator, the humor of Bernard Shaw,
the compact, crisp language of Japanese poetry and acting technique of the great Chinese actor Mai Ranfang, who was famous for his female role. Brecht developed new methods to train his actors for epic theatre. These actors were trained to act in a realistic play. Stanislavski asked the actor to become the character. Brecht, on the other hand, demanded that actor should show the character, thus maintaining the element of actor-character duality. He asked his characters to read the play like a novel. Brecht developed the A effect, a theatrical tool that discarded realism. Brecht never came to India, never saw any theatrical performance. World was not that small in the first half of 20th century. His reference to Oriental influences on the theory of alienation effect is limited to his exposure to Chinese theatre and Japanese literature. To substantiate my point about the alienation effect as developed by Brecht, I would like to give examples from one of his most popular plays, The Caucasian Chalk Circle. This play has a vast canvas, various locations, characters from different socio-economic strata of society. Soldiers हैं और फिर beggars भी हैं जो मांगने के लिए आए हैं पैसा, तो काफ़ी अलग अलग सोशल इकोनॉमिक्स और सोशल स्ट्रेटा के लोग आपको इकट्ठा देखने को मिलते हैं. It's a vast canvas that way. Yes, this play has a vast canvas, various locations, characters from different socio-economic strata of society. In this production, Brecht used masks, mime, fragmentary sets, music, half curtain, amongst other. Also, it's a play within a play. वो जब शुरू होता है तो दो ग्रुप्स हैं फार्मर्स के, किसानों के, जो एक जगह के लिए लड़ रहे हैं, और उसके बाद आखिर में ये तय होता है कि ठीक है, अब हम ये एक शो उनके लिए करेंगे जो जिससे हम दोनों जो हैं उनकी लड़ाई ख़त्म होगी और हम लोग इससे कुछ सीख लेंगे. तो उसमें फिर ये कॉकेशियन चॉक सर्कल की स्टोरी बताई जाती है, वो गाई जाती है, गाने वाले हैं वहाँ पर, और उसके बाद वो सामने स्टोरी इनैक्ट होती है. For Brecht, for every play, Brecht found new solutions to create a effect. There is a general debate going on in India whether Sanskrit theatre has had alienation effect. People forget that Sanskrit theatre existed much earlier in India. Besides, storytelling was an integral part of our theatre, whether it was Bhana, Prahasan or Prakaran type of Rupaka, which is very developed kind of playwriting according to Natya Shastra. The use of classical gestures, melodious music, fragmentary sets, the seating position of singers and musicians at the back of the stage visible to the audience, all these elements were artistically incorporated in the performance of a Sanskrit play. British gentry brought realistic theatre to India. Till today, it still exists in the commercial theatre of Maharashtra and Bengal. The 60s was the time when a whiff of fresh air took place in Indian playwriting. The writers affected by the deep disillusionment post-independence were looking for a new idiom. They successfully discovered new expressions, new structures, unfolding new themes to the audience. Most importantly, they refused to follow the diktats of realism. Written in Bengali, Marathi, Hindi, Kannada, these plays were translated and performed almost simultaneously in all the metropolitan cities of India. Suno Janmejai was one of them. Written by Adya Rangacharya, a Kannada playwright, the play was translated and performed in Hindi for the first time. The play opens with a discussion between Neta and Sutradhar. Neta is full of dreams. He wants to take his country to new heights. Sutradhar wants him to face the reality. He confronts Neta with an element of corruption in 4 different forms: an old man, a youth, a young woman, and a Mamuli Ram. पहली दफ़ा मामूली राम का कैरेक्टर उसमें आपको देखने को मिलता है.
Incidentally, they work in the office of Neta. The dichotomy between the aspiration of Neta and the ground reality is exposed by the Sutradhar, the artist. Here, a play within play situation negates realism. Also, the treatment given to the four characters, first as four separate principles and then turning them into characters, brings surprise element in the performance. Evam Indrajit to Badal Sarkar is another excellent example of the new trend. The character of author in this play is looking for a subject around him. He invites three persons from the audience. They are Amal, Vimal, Kamal. And then as an afterthought he sees Indrajit and says, Evam Indrajit. The audience sees these four characters going through different stages of life. The play has multiple locations which are shown through suggestive designing. The play gives a bird's eye view of a particular strata of society and not the story of one particular family using a box set. Dharmavir Bharati's classic play Andha Yug, based on the last days of the Mahabharata war and the death of Duryodhana, has the potential of a 70 mm film. The play opens with Kathavachak, the storytellers, who narrate the woes of the Kaurava clan, comment on their follies, give information about the changing locations in the play. Their descriptions of wounded soldiers coming back reminds us of the miseries of Second World War. Interestingly, the whole play is written in blank verse. The fourth play I would like to talk about is Einstein by Mohan Maharshi. This is probably the only play written on the subject of development of science. Here playwright brings three Einsteins face to face. Old Einstein, the professor in Princeton, young Einstein studying in Bern, and 12-year-old boy doing his school in Munich. At times they share the same stage, informing the audience about the time and the place they are in. दो जने खड़े हैं, दो आइंस्टाइन्स खड़े, एक बूढ़ा है, वो कहता है आज 13 जुलाई है 1954, प्रिंसटन। दूसरा आइंस्टाइन यंग है, वो कहता है आज 20 सितंबर है 1902, बर्न। तो इस तरह से अपने चारों तरफ वो समय और स्थान का एक कॉन्टिन्यूम बना लेते हैं और फिर वहाँ से अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार एक दूसरे से बात करते हैं. At times they share the same stage, informing the audience about the time and the place they are in, thus constructing a space-time continuum. In one scene, in a dream sequence, young Einstein sees a galaxy of scientists from Aristotle to Kepler, Galileo, Newton. Time travels in this play in a peculiar way. In one scene, for example, Einstein and Mileva, they are sitting in a garden. She leaves the stage to get him some iced coffee. Einstein has a long passage here informing the audience about their marriage, his job of patent officer grade 3, and his study circle named Academy Olympia. Yes, he's sitting there. While speaking his lines, he removes the pieces of white cloth covering the furniture on stage. What we see now is a study with a table with lots of books, 3 chairs, a bookshelf, and a blackboard, Einstein's famous blackboard. Meanwhile, Mileva comes back with 2 glasses of iced coffee. She is still in the earlier times. She realizes that Einstein has moved much ahead, goes back and brings his jacket as he is going to meet his other scientist friends. There are many Indian plays where non-realism or magical realism has been introduced by the playwrights. When a novel is transformed into a play, the playwright finds immense possibilities in the non-realistic structure. Begum ka takiya, Mahabhoj, दीवार में खिड़की रहती थी. There are so many. These are some of the successful examples. I believe the claim that
Sanskrit theatre had the alienation effect is far-fetched. And to be fair, Brecht never claimed that he had invented alienation. He developed a theatrical tool after studying past and present theatrical languages. He developed a method for his actors to act in a non-realistic way. He developed a production technique for his kind of epic theatre. I don't think that modern Indian plays were written as a reaction to established realistic theatre. While responding to their times, playwrights were venturing into new themes and play structures. For the theatre practitioners today, this is an exciting time. Whether it be Sanskrit theatre or Shakespearean or Brechtian or Kabuki or Nautanki or Tamasha, these are all pools of resources that they can dip into and find a language that is true to our time. The audiences, I can assure you, are certainly ready for it. Thank you so much. I think one powerful remark Angela ji made was that our theatre was never written as a response to something. So it's not an antithesis, it is the thesis. I really like that. Now, sadly, I mean, I could go on listening to all of you for hours, but I've been sort of given this warning that I have the unpleasant task of, telling people your time is up. And of course, the governor is coming at 4:30, so we ordinary writers and artists and directors have to shut up. Right, so I love you all, we love you, but 10 minutes is all we have for each speaker. So I have the unpleasant task of setting up my timer for 8 minutes. So if you're speaking and you hear this, it's not my cell phone ringing, it's your 8 minutes so that you have 2 minutes to wind up. I'm so sorry. I mean, I can't believe I'm doing this to all of you. Please forgive me. So now I invite Mr. Asghar Bajaj, who is, as rightly pointed out, Outlook has named him as one of the top 10 Hindi playwrights. Why of the country, of the world? So I think that is an important distinction. And his play, Just Lahore Nahi Dekhiya, is iconic and timeless. I don't know how many productions are running of that play for so many decades. So without further ado, Mr. Bajaj. दोस्तों, मैं इस विषय को आपके सामने इस तरह रखना चाहता हूँ कि मैंने इसको समझने की कैसे कोशिश की। और आप जानते हैं कि मैं नाटक लिखता हूँ। मैं नाटक का कोई विद्वान या थ्योरेटिशियन नहीं हूँ। तो किसी भी विषय को समझने का तो मेरा अपना ढंग होगा, अपना तरीका होगा। मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एक बड़ी मज़े की बात है, आदमी का, मनुष्य का यथार्थ से काफ़ी डिबेट रहा है, काफ़ी झगड़ा रहा है। रियलिटी जो है वो उसको अच्छी भी लगती है, लेकिन वो उसको चैलेंज भी करता है। वो उसको मानता भी है और वो नहीं भी मानता है। वो कहता है कि इससे तो दिल भर गया, अब इसके आगे क्या, अब कहाँ जाना है, क्या करना है। ये डिबेट जो है, ये डिबेट बहुत लंबे समय से बहुत लोगों के बीच में ये डिबेट हमेशा चली है और इंसान ने इससे आगे पीछे के रास्ते निकालने की कोशिश की है। ठीक है, जो हम देख रहे हैं वो ऐसा है, लेकिन क्या वो काफ़ी है? क्या वो काफ़ी है? वो क्या था, वो क्या होगा, वो और क्या होगा, और अब जो है और जो होगा उसके बीच में क्या रिश्ता होगा, क्या कोई संबंध बनेगा या नहीं बनेगा।
ये कोशिश पूरी की पूरी हमको साहित्य में, लिटरेचर में और ख़ास तौर से पोइट्री में मिलती रही है। और इस कोशिश के चलते हमने यथार्थ के सामने चुनौतियां खड़ी की हैं। एक चुनौती जो हमने बड़ी खड़ी की थी, वो चुनौती है कल्पना की, इमेजिनेशन, कल्पना की चुनौती। यथार्थ तो ये है, लेकिन इस यथार्थ को हम कल्पना में बदलने जा रहे हैं। इसको हम कल्पना में बदल देते हैं। कल्पना में बदलने की बात आप देखते हैं कि हमारे साहित्य में ख़ास तौर से जो पूर्व का साहित्य है, जो ईस्ट का लिटरेचर है, उसमें ये अलग अलग तरह से आपको आती हुई दिखाई देती है। हम एक चीज़ का एक रूप स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि तोता सिर्फ तोता है। तोता तोता नहीं है, तोता तोता है भी, तोता कुछ और भी है ना? तोते के आगे और क्या है? ये कल्पना हमको अजीब अजीब डायरेक्शंस में ले जाती है। और इसी के साथ साथ जो हमारे समाज और हमारे कल्चर के जो दबाव हैं, जो प्रेशर्स हैं, वो भी हमारे ऊपर पड़ते हैं। एक दबाव जो हमारे यहाँ बहुत मध्यकाल तक रहा है, अब हो सकता है कि हम उससे सहमत नहीं हैं, वो मन और बुद्धि के द्वंद्व का दबाव था। मन और बुद्धि। आपको एक सूफी कवि का एक शेर सुनाऊं जो इस दबाव के बारे में है। वो है कि वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी, वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खे इश्क का। यानी वो अजीब घड़ी थी जब इश्क का पाठ पढ़ा, प्रेम का पाठ पढ़ा। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खे इश्क का, जो किताब अक्ल थी ताक पर, सो वहीं धरी की धरी रही। बुद्धि जो है, ज्ञान जो है, वो ताक पर धरा रहा, क्योंकि हमने उससे बड़ा पाठ पढ़ लिया था, वो प्रेम का पाठ। प्रेम का पाठ पढ़ लिया तो उसकी हमको आवश्यकता नहीं रही। ये जो है वो हमारी रियलिटी को बनाने में, हमारी रियलिटी को मोल्ड करने में इस तरह के जो हमारे विश्वास हैं, इनका एक बड़ा योगदान रहा है, बड़ा योगदान रहा है। और सारी कल्पनाएं आप देखिए कि जो दास्तानें हैं, जो हमारे एपिक्स हैं, जो वो सारी की सारी जो है कल्पना की ऐसी उड़ानें हैं जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। तो कल्पना की ये उड़ानें जो हैं, ये हमको यहाँ दिखाई देती हैं कि किस प्रकार से हम यथार्थ को एक तरह से नियंत्रित, या हम उसको विस्तार देने की, या हम उसको अस्वीकार करने की, या हम उसको स्वीकार करते हुए भी अस्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना हो कि ये कल्पना की उड़ान जो है, इस कल्पना की उड़ान की कोई दिशा या आधार नहीं है। दिशा नहीं है, आधार भी नहीं है इसका। तो इसको आधार देने की कोशिश 19वीं शताब्दी के अंत में, 20वीं शताब्दी के शुरू में यूरोप में इसको आधार देने की कोशिश की कि ये जो कल्पना है, इस कल्पना का एक रीज़न भी बनता है, एक लॉजिक भी बनती है, और जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। एक दर्शन हमारे सामने आया जिससे ब्रेख्त भी प्रभावित थे, वो मार्क्सिज्म का दर्शन,
कि आगे भी हम जो बढ़ते हैं तो वो एक दिशा में जाएंगे, एक दिशा डायरेक्शन है, और वो एक प्रक्रिया है ना। उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। तो यथार्थ का विस्तार पहली बार एक तरह के रीज़न और लॉजिक के बेसिस के ऊपर किया गया, और ये कहा गया कि जो हम देखते हैं इसके आगे भी देख सकते हैं, इसके आगे भी देख सकते हैं, और जो ये सच्चाई है जो हम देख रहे हैं तो उसके आगे भी हमको सच्चाई दिखाई देगी। और इस प्रकार से ये साहित्य में ये धारा जो है वो आना शुरू हुई, और केवल नाटक या केवल कविता में नहीं बल्कि हम कलाओं में भी देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक युग है तो उसमें जो प्रोग्रेसिव राइटर्स का मूवमेंट है वो सिर्फ राइटर्स तक महदूद नहीं है, वो चित्रकारों में भी है, वो नाटककारों में भी है, वो लेखकों में भी है। और इस प्रकार से ये धारणा जो है वो हमारे यहाँ बलवती होती है। अच्छा, ये शर्लंडी उधर तो ठीक, और उसका प्रभाव जो है वो ब्रेख्त के माध्यम से हमारे समाजों को, हमारे जो विचार, हमें जो ख़ास तौर से जो हमारा सौंदर्य शास्त्र है उसके ऊपर उसका प्रभाव किस तरह से पढ़ना शुरू हुआ ये आप जानते हैं, ये आपको विदित है। और इसी के साथ और जो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि सारी कलाओं में जो ये हो रहा है, इस तरह की भावना, इस तरह की जो एलिमेंट, इस तरह के जो विचार आ रहा है कि यथार्थ का विस्तार कैसे होगा, यथार्थ के रूपों को कैसे समझा जाएगा, इसका असर कई जगह कई स्तरों के ऊपर पड़ता हुआ हमको दिखाई देता है। वजह शायद ये है कि ये वो ज़माना था जब यूरोप जो है ऊब गया था अपने उस स्थिति से जहाँ वो पहुँचा है, जो कि एक तरह से औद्योगिक क्रांति का समय था। वो ऊबा हुआ था, तो उसको किसी ऐसी चीज़ की तलाश थी जो ब्रेख्त को शायद चीन में मिली, चाइना में मिली, वो चीज़ जिसकी तलाश थी कि अब हम अपने इस रियलिज़म को किस तरह से परिभाषित करेंगे, किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये मेरा ख्याल से यथार्थ की तरफ ईस्ट के और वेस्ट के रुझान के टकराव का ये एक नतीजा है। जब आप ईस्ट और वेस्ट के विचारों को लेकर के और उनको आप कला के संदर्भ में रखते हैं तो उससे ये बात निकल के, ये एलिनेशन की बात निकल कर के सामने आती है। तो ये एक अपने को समझाने के लिए मैंने ये कुछ अपने दिमाग में कुछ नोट्स बनाए थे जो मैंने आपके सामने रखे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने सुना। Thank you so much. Yes, brilliantly said that it's the meeting of East and West that creates this. Like Twain was wrong, he said, never the twain shall meet, Rudyard Kipling, I mean. But, I think that's a wonderful original thought of the East and West meeting and something very interesting and exciting happening. Now we have another major Indian playwright writing in Punjabi, also a director and actor. And Mr. Atamjeet has done solo performances. And I think that's a great way. I think you did mention that, there's something about this Ek Patra Abhinay, which
automatically gives it a quality of aesthetics and drama and is non-illusory in some way, and hence makes the experience more exciting. I hope you speak a little bit, sir, about your solo performance, but feel free to speak on what you've prepared also. That'll also be interesting. That's not my condition, it is It is the condition. the condition. Okay, but put my alarm at 9:30. Okay. I will wind up within 30 seconds. Okay. बहुत आसान कर दिया काम मेरा मेरे से पहले बोलने वाले स्पीकर्स ने। मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आता था कि जैसे भी हमें समझाया गया या बातें सुनते हैं लोगों की, तो ऐसे लगता है जैसे एलिनेशन एक टेक्निक है, एक विधि है। मुझे लगा नहीं, ये विधि नहीं है, इसके पीछे आइडियोलॉजी है। मैं कोशिश करता रहा कि उस आइडियोलॉजी को पकड़ने की कोई यत्न हो उसका। संस्कृत थिएटर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम एलिनेशन के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ सकते हैं। वो रंग पट्टी है, वो पूर्व रंग है, वो कैरेक्टर अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, 2 कैरेक्टर बोल रहे हैं, तीसरा सुन भी नहीं रहा उनको। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं। और कमाल की बात यह है कि एक चीज़ कि संस्कृत थिएटर में विलन उस प्रकार का विलन नहीं है जैसा होता है। विलन में भी हीरो बनने के चांसेस होते हैं। एक ही थीसिस हुआ अभी तक संस्कृत नाटकों के विलन पर, उसने भी इसको प्रतिनायक कहा है, खलनायक नहीं कहना चाहता वो भी। इसके पीछे हमारी ईस्ट की वो फिलॉसफी है जो ये कहती है कि प्रभु जस्टिस करते हैं। अगर तुम्हारी मुंदरी गुआच गई है, वो मिल जाएगी, उसको याद आ जाएगा। ये फिलॉसफी है कि कुछ भी गलत होने वाला नहीं है, अंत में सब कुछ मिल जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। Have trust in your destiny. This is not the case with Greek theatre. This is not the case with epic theatre also. तो वो एक फिलॉसफी डेफिनेट आप उसमें से निकाल सकती हैं कि ये फिलॉसफी एग्जिस्ट करती है। मैं कोशिश करता रहा जानने की, कोशिश भी सीरियस मैंने तब की जब बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि मेरे नाटकों में ब्रेख्टियन एलिमेंट्स हैं। But I became serious when I wrote one play on one Kenyan freedom fighter who was an Indian, and he fought for the freedom of that country. And I wrote a play on him. Gugiwa Thianggo, you might have heard his name. He wrote its introduction. He termed that play as epic theatre. So that was the time when I started thinking about ब्रेख्टियन थिएटर अफ्रेश। सो इसकी जो आइडियोलॉजी है वो तो क्लियर कट नज़र आ रही, जिसकी तरफ इशारा किया है अस्कर वजाहत साहब ने, जिसकी तरफ इशारा महेश जी ने भी किया था कि ब्रेख्टियन थिएटर ऑडियंस को चुप कराने के लिए नहीं है, उसको सुख देने के लिए नहीं है। उसके संवाद जो है उसमें सुख है, रस है, स्वाद है, संवाद नहीं है। हमारे थिएटर, मैं बाद में आऊँगा कि कैसे मणिपुर में आज भी एक आदमी, आज नहीं कुछ समय पहले एक आदमी ट्रांस में ले जाकर ऑडियंस को वही इफेक्ट क्रिएट करता था जो ब्रेख्ट करता था अपनी एलिनेशन की थ्योरी के साथ, उसके बिना। कन्हैया लाल की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं, वो लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ इशारा ही करूँगा उसकी तरफ। तो इसके पीछे अर्बन पिस्केटर का नाम आया 2 बार। मैं उसके भी पीछे जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ मेयर होल्ड के पास। मेयर होल्ड जो है वो रशियन था लेकिन जर्मन डिसेंट का था, मूलतः वो भी जर्मन था। और उसने कावाकामी नाम के एक बंदे, उसकी कंपनी में सादा याको की रिदमिक स्टाइल की एक्टिंग देखी थी, मे बी इन 1902। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ नॉन रियलिस्टिक थिएटर इन वेस्ट। तो उसमें एक प्ले का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, द डॉन प्ले उसने किया। उसमें प्लेकार्ड्स लगा दिए गए, लीफलेट्स जो बांटे गए लोगों के अंदर, अनाउंसमेंट होती थी बार बार किसी न किसी चीज़ की। एक एक्टर खड़ा हो गया और अनाउंसमेंट आ गई कि रेड आर्मी ने जो है वो
ब्रेक थ्रू कर लिया क्रीमिया में, क्रीमिया आजकल फिर वो खबरों में है। तो उसके बाद एक बंदा सोलो सॉन्ग गाता है, एज मार्टर यू फेल, ऑडियंस खड़ी हो जाती है साइलेंस में, वो सॉन्ग खत्म हो जाता है, प्ले दोबारा शुरू हो जाता है। द डेफिनेट फिलोसफी बिहाइंड दिस प्ले इज के लोगों को ऑब्जर्वर बनाना है, उनको डिसीजन मेकिंग में लेके जाना है। उसकी जो प्ले की आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऑडियंस को वो डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर रहा है बार बार। यहाँ से पकड़ा फिर अरविंद पिस्केटर ने, तो ये है उसकी बैकग्राउंड हमारे ब्रेक्ट की जो कुछ ने किया अरविंद और मैं आपको बताता हूँ कि क्या उसने पे किया अपनी इस फिलॉसफी के लिए। मेयरहोल्ड ने उसको टॉर्चर किया गया, बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया, और वो ये कहता है, इन हंटिंग फॉर्मलिज्म यू हैव एलिमिनेटेड आर्ट, अपने आप को कहता है कि तूने हंट करते हुए उसको कहा गया, इन हंटिंग फॉर्मलिज्म यू हैव एलिमिनेटेड आर्ट, ही वाज मर्सीलेसली beaten and executed for his mysticism and for the neglect of socialist realism. उसको execute कर दिया गया. This is the price that he paid. So it starts from Meyerhold, very strong protest. उसके बाद फिर पिस्केटर उसको उठाता है, फिर ये आता है हमारे ब्रेक्ट के पास। एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इंडिया के साथ ब्रेक्ट का वो संबंध नहीं है जो चाइना के साथ है, जिसका जिक्र भी अभी हुआ। मेई लांगफांग एक चाइना की बहुत बड़ा एक्टर था, लेकिन करता वो फीमेल रोल था, और जब जापानीज ने कंट्रोल कर लिया चाइना को, उसको कहा गया कि अपना रोल करके दिखाओ आर्मी को। प्रोटेस्ट यहां तक जाता है, उसने अपनी मूंछें बढ़ा ली, नहीं करूंगा। दैट इज what the philosophy of Brechtian theatre is. ये सुख नहीं देता, ये स्ट्रगल में डालता है, और सुख का वक्त निकल चुका है। इंडियन प्लेज, इसीलिए संस्कृत प्ले 1000 के साल के लिए चुप कर गया। आजकल क्या हो रहा है, मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा था 2-3 किताबें जो मेरे हाथ में लगी, आदि रंगाचार्य जी की या नेमी चंद्र जैन जी की, और प्रसन्ना ने भी एक किताब लिखी है अभी, वो भी किताब पढ़ रहा था। तो इस नतीजे पर ये सारे लोग पहुंच रहे हैं, और मैं भी शामिल हूं उसमें, कि हम अपनी इंडियन ट्रेडिशन की फिलॉसफी को किसी तरीके से हम रखे हुए हैं उसमें। मैं अपने प्लेस की तरफ देखता हूं तो बहुत सारा ट्रेजिक मटेरियल उसमें है, लेकिन कहीं ना कहीं होप फिर एंटर कर जाती है। मेरे अपने पास भी उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि क्यों आ गई है होप। मुझे लगता है वो मेरी इंडियन फिलॉसफी है, वो मेरी इंडियन बैकग्राउंड है, जो मैं ब्रेक्टियन होते होते भी फिर इंडियन हो जाता हूँ, निकला नहीं जाता उसमें से। ये कुछ सोच के नहीं करता कि अब मैं ब्रेक्टियन हूँ और अब मैं होने लगा हूँ इंडियन। फॉर एग्जाम्पल, कैसे ब्रेक्ट कैसे होता बंदा। मैंने वर्ल्ड वॉर 1 पर एक प्ले लिखा, अब उसमें से एक कैरेक्टर पर प्ले लिखना बहुत आसान है। वॉर को एक मटेरियल के तौर पर यूज करना, यू विल हैव टू लीव दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे ऑर्डिनरी प्ले में होता है। तो आप मोन्टाज में जाओगे, उस नैरेटिव में जाओगे जिसकी ब्रेक्ट मांग करता है। इसी तरह मैंने प्ले लिखा, आप लोगों को शायद कम ज्ञान होगा उसका, सबको नहीं मैं कहता, कुछ लोगों को होगा भी। एक गदर पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी, गदर इंडिया वाला 1857 वाला नहीं, गदर पार्टी ऑफ इंडिया अमेरिका में बनी थी, और लोगों ने लेड बाय मोस्टली पंजाबीज, उसमें कुछ महाराष्ट्र के लोग भी थे, बंगाल के भी थे। 157 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया था, फांसी के तख्ते पर चढ़े थे। 200-300 लोग और थे जिनको जेल हुई और अलग अलग किस्म की इम्प्रिजनमेंट हुई। अब 157 लोगों की मूवमेंट को मैं कैप्चर करना चाहता था। अगर मैं 1 या 2 हीरो पकड़ लेता हूं तो वो गदर पार्टी का इतिहास नहीं बनता, वो करतार सिंह सराबा का बन जाता, वो एक आदमी का रह जाता। 157 को कैसे लेके आऊं मैं,
और उसके पीछे एक डेफिनेट आइडियोलॉजी भी थी जिसकी बात व्यक्त करता है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो व्हाट आई डिड वाज कि स्टेज के ऊपर एक प्ले के अंदर प्ले कर रहे हैं वो उस पार्टी, तो प्ले के अंदर प्ले, लेकिन सभी लोग फिर भी नहीं आ सकते। एक काशीराम का कैरेक्टर है मेरे सामने आया, बहुत अमीर आदमी था, सारी फंडिंग वो करता था बंदा चुपचाप। बाद में उसको एग्जीक्यूट जिस केस में किया गया उस केस में वो शामिल भी नहीं था। अब उसका जिक्र ही कब होता है। मैंने एक बहुत बड़ी बुक खड़ी कर दी स्टेज के ऊपर, तो कुछ कैरेक्टर पे किताब में से लेकर आया। वो कहते हैं कि हम फुट नोट्स में हैं, लेकिन फुट नोट्स को आप नहीं निकाल सकते, हम तो बाहर आ सकते हैं ना। तो वो फुट नोट वाले बंदे भी उस पर आए। तो इस किस्म के नाटक जो आ जाते हैं उसमें भी होप आ जाती है। इसका एंड भी होप वाला है। ये होप हमारी इंडियन है, लेकिन जो समय है, जो कंडीशंस हैं, उसमें हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, उसमें हमें सवाल करने पड़ेंगे। वो सुख का समय नहीं है जैसा कि संस्कृत नाटकों का था। मुझे लगता है यही मिलन बिंदु है संस्कृत इंडियन नाटकों का और ब्रेख्तियन नाटक का। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Atamji. As you rightly said, the purpose of theatre is not to make an audience happy. I keep telling my actors and my writing students that don't just think about stroking your audience, think of poking them also. And I think that was a point well brought out. Now we have another eminent playwright. It's raining playwrights. That's great. Wonderful. I'm in good company. Mr. Bratya Basu. Oh, he's not here. Oh, how sad. I'm sorry, I take my words back. Oh, I was wondering why this is. Okay. I invite another luminary from the theatre, Mr. Debashish Majumdar. He has a theatre company called Shudrak, right? And again, if you've seen any of the theatre work from Bengal especially, it's as close as we can get to group theatre. This whole theatre of ideas and psychophysicality. So please feel free to speak about your theatre or whatever you wish to speak on. Okay, all right. My warm regards to my best wishes for all present here. Thanks to Sahitya Academy for inviting me to be a part of this remarkable event of UNMESHA, and also thanks to Sahitya Academy for including theatre in Literature Festival. It is difficult to determine the exact time in which the alienation effect was brought in our theatre arena. Though, in my opinion, theatre cannot have a subcategory as Indian theatre. It will not be undue to claim that theatre was extant in pre-colonial India. The major forms were folk theatre and Sanskrit theatre. Some theatre exponents have tried to find the roots of Sanskrit theatre in Greek theatre, but the originality of the Sanskrit theatre cannot be denied. The unity of place, one of the main features of the Greek theatre, was not at all a characteristic of Sanskrit theatre. The style of acting was also different. Our ancient theatre scripture, including Bharat Shastra, delineate Rosh and Bhava. The Bhava, sentimental expression by the actor, and the Rasha, the emotion evoked in the audience or spectators, were integral part of acting. Alienation effect, the chief or sole exponent of which is the actor, against whom stand the spectators whom Brecht described as co-author. Raises question on which we have to wonder. In the prologue of Kalidas Abhigyan Shakuntalam, the dialogue between the Sutradhar, the narrator, and the Noti, the actress, actually use Bhav and Rosh. The question arises,
whether their style of acting follows that of the king and Shakuntala. Now, this cannot be. The Sutradhar and the Noti communicate with the audience in their own independent way. How to classify this kind of action, or at the end of any Sanskrit play during the recital of Bharat Bhakko, can any actor exhibit so-called involvement in a character? In the colonial period, Shishir Kumar Bhaduri, an eminent actor of the Bengali theatre, used to enact Ram in the play Sita. Some from the audience applauded him, saying that he seemed to have no other existence than Ram on stage. To this, Shishir Kumar answered, within quote, "But while being in the character, I do have to be very careful that love and kush get the footlight," unquote. Can the distance between the role on stage and the real self of the actor be called alienation? Those of us who have associated themselves with the theatre in the 70s of the last century have been acquainted with the word alienation effect in the context of the Western theatre only. Betrobeck and Aaron Piscato, in their Dogmas of Theatre, have discussed alienation effect, which can be traced in the concept of epic theatre and which, breaking the barriers of the Aristotelian tradition, has presented new theory on acting and presentation. This theory, in this explanation and application, has drawn heavily from Marxism. But in the 70s, this theory had not much influence in our theatre. By our, I precisely mean the Bengali theatre. In those days and even now, securing and delivering information about theatre activities all over India was and is not possible in a single moment from a single place. Language is not the only barrier. Carrying out the exact communication is a huge problem. This makes me confine myself in the details of Bengali theatre only. The Occidental theory, which has mostly been discussed in Bengali theatre, pre-independent and post-independent, is the theory of Stanislavski, where science of acting, method of acting, etc., have been referred to. Let Utpal Datta, in spite of his strong adherence to Marxism and in spite of establishing an independent Brecht society, had never translated to produce any Brecht plays. According to Shambhu, in the lines of Russian director Jablonski, standard acting always falls in line with the standard acceptance universally throughout the ages. Outstanding performance is not out of the way performance. Both of them had enough opportunity to watch many of London ensemble plays. In the mid-70s, post Shambhu and Utpal Datta, Bengali theatre had many of Brecht plays enacted through the initiative of the enthusiastic directors. Theatre personalities clashed on how much importance should be given to Brecht theory in Bengali theatre, but no solution was reached at. Audience had always accepted or rejected plays acting upon its own judgment. Alienation effect had no role in it. For a long time, playwrights, directors, actors of Bengali theatre were immensely influenced by the philosophy of Marx. But there has not been much effort to apply the alienation effect of Brecht. Now, I need to clarify why I have mentioned Brecht's effect in particular. In the beginning, I have referred to the Sanskrit play Abhigyan Shakuntalam and the acting style of its, Sutradhar and Noti. Here I would like to draw your attention to our very popular folk performing art
from Jatra. In Jatra, the actors try to communicate with the audience, stepping out of the character or role to explain or analyze the sentiments expressed and emotion evoked. The actor's effort is always to reach the audience through the character and beyond the character in different styles. This illustrates distancing the role from the real. The dual model is also exhibited in Bengal's another folk form of performing art, that is Kirtan rendition. This model reaches its artistic height in Rabindranath Tagore's play. Initially, Rabindranath plays were influenced by the Western structure, the Greek plays and the Shakespearean plays. But his search for the original form made him delve into the folk form of India, especially Bengal. He gave a unique modern touch to the folk form. Sometimes by the use of songs, sometimes in the description of an event, he has drawn the actor out of the core character many a time. The distancing or drifting away has not been given any specific term. We can certainly call this alienation effect. This is why I am eager to observe the alienation effect of Brecht. I believe alienation effect of Brecht completely different thing. If we want to understand alienation effect of Brecht, we should know its commitment to Marxism, its commitment to society, and also epic theatre and Second World War situation and other things also. However, Bharat, in his Natyashastra, score of drama, first chapter should 114, 115, 116 mention, in this world of drama there will be solace for the brevet, the overworked, the mourner, and it has to be religious, commendable, well intention and rejuvenating and enlightening for the mankind. There is no such knowledge, skill, art, education, yoga or karma which is not related in the drama. This concept has not much changed in the modern or postmodern phase. So, with the evolution of time and society, theatre will find its ever new form. It has no obligation to stick to any particular theory or any particular style of the structure. Today's theatre will be obsolete tomorrow. As time will pass on, we have to look for a new theatre which will grow old again. And in this way, we have to carry out our search for the new form of theatre. Theatre is an art continuous research, whether to theory or form can be everlasting. Thank you. Thank you so much. It's interesting how Brecht found a home in Bengal, because I think all his plays have been performed in Bengali, right? And it's again the dedication of the society to socialism. And it's not as if they've taken Brecht because it's a new form. They've taken Brecht because it's a familiar form for them. So it's like not like being adopted, but the prodigal son returning home to Bengal, so to speak. So thank you very much for that. Yes. Now, having authored over 13 books of literary criticism and also a man of the theatre, I'm very happy to invite Mr. Bijoy Kumar Shakpati to speak on his work. I had the pleasure of meeting you, sir, in Bhubaneswar, if you remember. Yes, yes, yeah. Renowned theatre persons in the stage, dear friends.
I will now analyze what is called alienation effect. Alienation means isolated, departed, discarded, dislocated from others, society, from surroundings. But from the view of literary context, the theory, it connotes man's detachment to the world and loss of communication and meaning. It is needless to say that alienation is a salient feature of existentialism. We know Camus, Albert Camus, Beckett, Adam of Ionesco, Jean Genet, their plays are based on existentialism. But when we say alienation effect, it is the concept of Bertolt Brecht and his epic theatre, which is called the classical modernist. We can call Brecht as classical modernist. And after Shakespeare, he is the most performed of all dramatists. Epic theatre means a theatre that narrates rather than represents. Brecht studied Marxism thoroughly. He wanted the theatre as well as art should be instructive and not illusory. And it should give the workable picture of the world. He also rejected the techniques and devices of his contemporary playwrights because their plays stimulated illusions than to give experience of life. Brecht also discarded symbolism because it creates illusion and aesthetic atmosphere and it is not constructive. According to him, the work of realism is to create a sham reality, and it creates only what is familiar and expected. Brecht's center of attention is not individual. He is a reputed writer of socialist realism. Social reality and socialist realism, these are two different things and different theories. So Brecht's attention is on the whole society. He tried how social forces determine the man's fate. This is most important. How social forces determines man's fate. For that reason, he presented large-scale social objects on stage. For example, instead of a well-furnished drawing room, he presented on stage the bizarre street of metropolis. On the stage, nothing should be concealed, according to Brecht. For example, scenery was openly theatrical and newsreels were projected on backdrop and lights presenting moon and stars were left unconcealed. The characters did not pretend to be the person they played. They made clear that they were acting certain roles. He did not believe in the need of any make-believe. Make-believe was he did not believe in the need of any make-believe world on stage, and therefore he refused any sort of illusion to be created on stage. He found it responsible to induce the audience to identify own experiences and feelings with the production. The more the audience identified with the character, the less it learned, he felt. The spectator, according to him, should be enabled to add on an attitude of inquiry and criticism in his approach
to the incident. Epic realism is thus an extreme form of undisguised realism in acting. To achieve this type of production, Brecht introduced what is called alienation effect. The first condition for A effect, alienation effect, short form A effect application, is that stage and auditorium must be paused, everything magical, and no hypnotic tensions should be set up. The audience should not be worked up by a display of temperament or emotional identification. In 1928, Brecht, in his production Threepenny Opera, adopted the above theory. First time in Threepenny Opera in 1928. And it gathered support from the sociologist, for example, Fritz Sternberg, and critic, philosopher, his friend, Walter Benjamin. He is a good friend of Brecht. His famous book, Understanding Brecht, was published in the year 1966. Stanley Mitchell has written its introduction, and it is translated by Annie Bustock. Brecht in his plays like The Good Person of Szechuan, Life of Galileo, The Caucasian Chakshakli, Mother Courage and her children had experimented his ideology. In fact, Brecht built a scientific theory of a radical drama. Scientific theory of a radical drama in which he has done experimental work upon contemporary society. Brecht and his Berlin ensemble played a vital role to popularize and promote the theory. Brecht discarded the bourgeois realism based on empathetic identification between audience and actor. His plays are introduced by narrators, interpreters, sometimes by cynics, compeers, and cabarets. The Brechtian theory of drama, his alienation effect and epic theatre is not free from its own contradictions. It has its own contradictions. Of course, after the production of his Threepenny Opera and Mac the Knife, Brecht got worldwide reputation and recognition and popularity also. One of his, there are several contradictions, and one of his contradiction is what I feel. Brechtian theatre created new aesthetics, but not new politics in art. In this connection, we can analyze how the alienation effect was present in Indian drama also. Before Brecht, it should be pointed out here that the above theatrical device is present in ancient folk theatre as well as Indian classical theatre and also in our post-colonial theatre, present theatre, contemporary Odia theatre. The modern Odia theatre after 1970, where narrator, interpreter is present and the spectators are alienated from the characters and plot. At times, narrator and interpreter comes to the stage and describes about the development of the story. Devasith Da, he has given the example of Abhigyan Shakuntala, another famous playwright who has written a practice drama, Karpura Manjari. He belongs to this place, Rajsekhara, the famous theoretician also. Kavya Mimamsa is one of his famous work, where Sutradhara and Pariparshika, they narrate the story, and they in the Prastavana scene, Sutradhara as well as the Pariparshika, they enter into the stage and they narrate about the story.
Let us discuss about the folk theatre of India. That is unself-conscious, spontaneous, boisterously naive. The classical theatre is rigid, complex and sophisticated. But the folk is unlearned. The classical is chiseled, the folk sprawls. The classical demands mathematical exactness. One is rural and other is regal. Strength. The strength of the classical theatre and also the folk theatre, they exist in India with their own strength. Tamasha, Bhavai, Nautanki and Nakal are very popular in northern and western part of India. Similarly, Jatra in Bengal, Lida, Chau, Deshiya Nato, Giti Natya, Pala of Odisha, Therukut of Tamil Nadu, Jakshagan and Kannada are rich with the local colors, rituals and Puranic elements. One thing I want to point out here, there is a crisis in after 1970. In colonial period, there was a cultural gap between rural theatre and elite theatre. It is a historical fact, and I will analyze shortly. Take 2-3 minutes. The gap is strengthened a lot after independence in India. The professional theatre companies were almost closed between 1970-75. The folk theatre were in a wretched condition because the urban theatre viewers did not like it. Similarly, the rural audience could not understand the elite theatre, which was full of experiments. Actually, it's a critical period in the history of theatre. Sangeeta Nataka Academy was very much concerned and serious of it. An academy organized a seminar for 2 days entitled Round Table on the Contemporary Relevance of Traditional Theatre. It is a historical document. Reputed theatre persons all over India attended the seminar. After the introductory note given by Suresh Avasthi, papers were presented by Utpal Datta. Name of the paper is Jatra and its relevance. G. Shankar Pillai presented the paper Modern Relevance of Traditional Theatre, and Jagdish Mathur, he presented the paper A Plea for Coexistence. Santa Gandhi presented the paper A Search for Links. In the 2 days discussion, the participants were Utpal Datta, Dina Gandhi, Santa Gandhi, Jagdish Mathur, and 20 other reputed theatre persons of India. I will conclude here, just 2 lines, after 2 lines. Theatre, Indian classical theatre and folk theatre became more meaningful. Sutradhara, Nata, Nati, Vidusaka, dance, music, written meaningfully. It is perhaps again our theatre search for roots. Nowadays, the grammar of contemporary playwright is written by them. They are not depending on Brecht, Grotowski or Stanislavski, etc. They are writing their own grammar. It has roots in Indian soil. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Yes. Oh God. I hate this job. I'll never again am I going to be chair. You know. Now, last but certainly not the least, here's before you get up, let me finish what I have to say, is that here is a director whom I admire personally, simply because I've seen so many of your works over the years, right from Zulwa. You've probably even forgotten your production, but I remember it. Right, yeah, your first production, right? Inaugurated here in Bhopal. Oh, okay. Good. So you are familiar with this theatre. It's cutting edge, it's social, it's theatrical, it's got everything that we've been talking about. From Greek comedy to Sanskrit drama to contemporary theatre with a social voice like Nirvan, the play on the lives of transgender people. He has this, what was it called? Janeman, yes.
he has this gamut of work, aesthetically produced, politically accurate, and of course, dramatically very alive. So, ladies and gentlemen, Mr. Vaman Kendre, and I'm not putting the timer for you. Speak as much as you want till the governor arrives. नमस्कार। नए नाटक से ही शुरू करते हैं, गवर्नर विल नॉट कम। मुझे लगता है कि एलिनेशन का सबसे बेहतर उदाहरण वो बेल है। मैं तो उससे डरना शुरू हो गया। यहाँ एक आदमी है, बहुत अपनी दिल की बात कहना चाहता है, फिलोसॉफिकल बात करना चाहता है, चिंतन की बात कहना चाहता है, और बीच बीच में टॉ हो रहा है। इससे और कोई डिफिकल्ट एलिनेशन नहीं है फॉर काइंड इंफॉर्मेशन। क्या है, हम भारतीय लोग हैं, कोई भी नई चीज आती है तो उसको सर पे उठा के नाचने का स्वभाव है हम लोगों का। मैं ब्रेक से तब से डर रहा हूं जब से मैंने पहली बार नाम सुना है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में विद्यार्थी था। एक छोटे से गांव से गया था, तो छोटा मोटा जो भी नाटक किया था और डायरेक्ट बर्टोल्ट ब्रेख्ट। और तब पूरे भारत में ऐसा लग रहा था कि पूरा होल इंडिया इज फ्लडेड बाय द बर्टोल्ट ब्रेख्ट्स प्लेस। एलियनेशन, अलगाववाद, निरपेक्षता, तटस्थता, विवेक का जागरण, ये सारे शब्दों से मैं तब से वाकिफ हूं और आज तक उसका अर्थ ठीक से समझ नहीं पाया हूं। क्योंकि जिस संदर्भ में ब्रेख्ट एलिनेशन की बात करता है, शायद वो आज भी हम समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। इस जन्म में कुछ नहीं मिला तो अगले जन्म में देख लेंगे ना। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कुछ पाने की ना कुछ खोने की। हमारे पास तो कितना 84 लाख योनियों का फेरा है। तब तक कुछ नहीं हुआ तो ब्रेक हमारे साथ आएगा ना। जिसको एक ही जन्म में सब कुछ पाना है उसके लिए ब्रेख्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है, मेयर होल्ड भी उतना इंपॉर्टेंट है, ग्रोटोस्की भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, पीटर ब्रूक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है मूलतः संस्कार का फर्क है ये। भारत में जिस लिहाज से एलिनेशन ब्रेख्ट मानता है, उस लिहाज से वो कभी पनपा भी नहीं और पनपेगा भी नहीं। क्यों हमें दादी नानी की कहानियां पूरी क्या कहते हैं, लगाव से सुनने की आदत है और वो बचपन का संस्कार है। हम किसी भी चीज में जब तक उस बहाव में बहते नहीं हैं तब तक उसको हम अपना मानते ही नहीं है, चाहे वो नाटक भी हो। मूलतः मुझे ये दो पैराडॉक्स दिखता है, दो विरोधाभास दिखता है। एक रस सिद्धांत जो हमारा संस्कार है, किसी भी चीज में दिलचस्पी लेना, किसी भी चीज में रुचि लेना, और हम इसको कहते ही हैं, हम प्रेक्षक नहीं होते, हम आस्वादक होते हैं। वो भाव प्रदर्शन करने वाला एक्टर होता है और उसके भाव प्रदर्शन से जो हमारे मन मस्तिष्क पे परिणाम होता है वो रस है। और जब तक वो रस परिपूर्ण तरीके से हम उसका आस्वाद नहीं लेते तब तक ना हम रोते हैं, ना हम हंसते हैं, ना उसको प्रतिसाद देते हैं, ना ताली बजाते हैं। ये हमारा संस्कार है, हम उसको क्या करें। जिन नाटकों का महेश ने अभी उदाहरण दिया, वो सारे नाटक करने के बाद भी मुझे लगता है कि हाँ उसमें सब एलिनेशन है, वो भारतीय एलिनेशन है। एलिनेशन तो हमको बचपन से उसकी घुटी पिलाई जाती है, पर जिस संदर्भ में हमारे सारे थिएटर में देखिए, सारा जो व्याकरण है वो एलिनेशन का है। अब स्टोरी टेलिंग देखिए, सूत्रधार आता है बोलता है, नटी आती है वो बोलती है, लोक नाटकों में शायर आता है, लोक नाटकों में भागवत आता है, वो निरंतर बीच बीच में टोकते रहता है।
पर उसका टोकना है वो हमको एलिनेट नहीं करता है। ये हमारी या तो ताकत है या उसको कह सकते हैं वीकनेस है। बीच में आके कमेंट करता है। जो 3 यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ स्पेस, ये हमारे जितने भी सोशल एंटरटेनमेंट के अभिव्यक्ति के माध्यम में लोक कलाएं हैं, उसमें तो खुलेआम तोड़ता है। अब सैया भाई कोतवाल में राजा और सिपाही का सीन है और अचानक सामने आके आप बैठे हैं, सतीश आलेकर जी बैठे हैं, आप अभिनव जी बैठे हैं, तो इनका नाम लेंगे, या टीकम जोशी बैठे हैं तो उनको लपेट लेंगे। हमारे नाटकों में जो है या भारतीय कलाओं में लपेट लेने की बड़ी क्षमता है, और जब तक हमें वो लपेट नहीं लेता है, जब तक हमें कोई सोचने से दूर रखता है, तब तक एलिनेशन हम कैसे ला सकते हैं। जब एलिनेशन का व्याकरण शुरू हो गया दिल्ली थिएटर में और आसपास के थिएटर में, जो इतनी सिंपल बात ब्रेक्ट कहता है कि भाई 2 अंक होते हैं, वो एलिनेशन ही है, और क्या है। पहला अंक खत्म हो गया, लोग बाहर गए, चाय पी हो तो उस भाव से, उस प्रभाव से बाहर आ गए, अपनी बातें 4 कर ली, फोन भी देख लिया, वापस आके उस नाटक के प्रभाव में आता है। इससे बड़ा एलिनेशन का कोई उदाहरण नहीं है। सीन का स्ट्रक्चरिंग में, प्ले राइटिंग स्ट्रक्चरिंग में या डायरेक्टर के स्ट्रक्चरिंग में, जहां सीन खत्म होता है, ब्लैक आउट होता है, वो एलिनेशन का ही तो डिवाइस है। इतनी छोटी छोटी बातें थी जो ब्रेक्ट ने इस्तेमाल की, हम लोगों ने उसको इतना सर पे उठा लिया। क्या नहीं देखा ब्रेक्ट के नाम पे हमने नाटक में। मोटरसाइकिल आ गई, जीप आ गए, बसेस आ गई, एक नाटक में तो क्रेन आ गई, अर्थरोई क्रेन में बैठ के नीचे उतर रहा है। अर्थरोई का साइज इतना है और इतने पटाखे बज रहे हैं, पूरे टेरेस में भी पटाखे बज रहे, इधर भी बज रहे। वो नाटक मेरे लिए खत्म हो गया, मर गया। मैं वो पटाखे क्यों बजे वही देख रहा था। तो मेरा जो विवेक का जागरण है वो कहां गया। मुझे लगता है हमारे जहां ब्रेक्ट ने दूसरी या पहली महायुद्ध के बाद और उसको स्कूल से हकालने के बाद तो एलिनेशन समझ में आ गया। हमारे यहाँ का सामाजिक स्तर देखेंगे, जातिगत जो स्तर है, धार्मिक जो स्तर है, यहां पर हमने कितने लोगों को जिंदगी से एलिनेट रखा है। एलिनेशन तो उसको समझ में आएगा ना जो एलिनेटेड है, जो कभी अस्पृश्य था। आज की तारीख में हमारे इधर कितने तरीके से हम एक दूसरे से एलिनेट कर रहे हैं, एलिनेट हो रहे हैं, ये देख लीजिए। कई बार तो ऐसा डर लग रहा है आज के समय का कि इंसान खुद से ही एलिनेट हो रहा है। बर्टल ब्रेथ के ग्रामर को उनको इतना एहसास नहीं था कि मॉडर्न लाइफ में एलिनेशन थियरी इतना प्रभाव डालेगी कि 22 मिनट का एपिसोड देखना है तो उसके 3 टुकड़े होंगे और हर बार आपको एलिनेट होना पड़ेगा। और आजकल जो रील्स देख रहे हैं हम सोशल मीडिया में, 30 सेकंड का रील है, उसमें 2 बार एलिनेट होना पड़ता है क्योंकि किसी ना किसी का एडवर्टाइज घुस जाता है। तो ये जिंदगी से दूर है कहां एलिनेशन। इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और आई थिंक जो हमारा स्ट्रगल है उल्टा है। हमें एलिनेशन नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए बीच, क्या कहते बीच की एडवर्टाइजेस। हमें सलगता का अनुभव लेने का संस्कार है और आप उसमें अड़ंगा डाल रहे हो। तो हमें आज की तारीख में वाकई ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भारतीय थिएटर में कभी एलिनेशन ने जन्म लिया है क्या। एक कुछ उदाहरण छोड़ दीजिए जो आदर्श उदाहरण होते हैं। मुझे लगता है अब इस समय बारी आई है कि हमें, क्योंकि मुझे तो आजकल ऐसा लग रहा है कि इतना सोशल मीडिया का बम्बार्डिंग है, इतना ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सिनेमा है, सीरियल्स है, बाकी सारा जो जमावड़ा पूरे थिएटर के साथ है, कहीं ना कहीं मुझे थिएटर ही एलिनेटेड लग रहा है। वाकई समाज को थिएटर की जरूरत है, ऐसा सवाल पूछने के बाद उसका कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिलता है। जो हम ही हैं थिएटर करने वाले,
वो अपने पूरे पैशन के साथ, अपने पूरे शिद्दत के साथ नाटक कर रहे हैं। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि पूरे इस 140 करोड़ की तादाद में कितना परसेंटेज लोग नाटक देखते हैं? उसके फिलॉसफीज की बात तो हम बाद में करेंगे। तो आज मुझे आज की तारीख में भारतीय थिएटर ही, नाटक ही कहीं ना कहीं एलिनेट हो रहा है, आइसोलेट हो रहा है, ऑब्जेक्टिवली उसको धक्का मार मार के उसकी स्पेस को हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमको उस दिशा में बहुत गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। इसलिए हमें कौन सा एलिनेशन चाहिए कि जो हमारे विवेक का जागरण करे और फिर भी भारतीय रहे। हमें हो सकता है कि ब्रेक के एलिनेशन थिएटर की जरूरत नहीं है, हमें नए एलिनेशन की जरूरत है जो ब्रेक के मूल सिद्धांत को पकड़े और भारतीय संस्कार को, भारतीय सामाजिक संदर्भ को, भारतीय सरोकार को और समाज के सीढ़ी पर खड़ा हुआ आखिरी आदमी है उसके साथ खड़ा रहने वाला थिएटर जब खड़ा होगा तब मुझे लगता है भारतीय थिएटर में एलिनेशन होगा। धन्यवाद। Thank you so much. You've raised so many questions that is the mic on? Can you hear me? Yeah. So, yes, ma'am. Good evening or good afternoon. I'm Tanisara Razavi. I thought today alienation effect in Indian plays would be talking about the need for belonging that each individual has. Instead, I got an absolutely luxurious and fabulous expertise on Brecht, whom I had studied in school as well as acted in college, in Delhi University. But I want to know, is there not a need for us to understand that alienation is something that is very important to each of us? Because every one of us here wants to belong. And when we do not belong, we are alienated. So I'd like to know your comment on that. Yes, that is exactly why I have a problem with the word alienation. I do not think it is a good translation of Befremdong. And that's, nobody wants to be alienated. Every one of us want to belong, no matter how radical you are. I think a better word, and that's where all this confusion is coming because of that horrible word that it's been translated to. I would say that distancing, and I prefer, again, you know, it's open to discussion, I prefer the word psychological distancing. You're not distancing, no. You're not physically alienating your audiences. You don't want that. You don't, that would mean telling your audience to get out of the auditorium. Right? That is not what Brecht, in my opinion, I could be completely wrong, please correct me. I think it is psychological distancing from what's going on stage. So it's a partial illusion. There is the need for that, and there is a need for us to draw from. It's like, instead of believing in the given circumstances of the play, you believe in your own circumstances as well, right? What I wanted to say was Brecht. Very good. I've studied, I've acted, great. Yeah. But the fact is that alienation effect in Indian plays would have could have told us about how our theatre is telling us that there are so many different people. Okay, I thought it would have something to do with culture shock. Since I have been a part of culture shock repeatedly out of stupid choices that I made, but I realized that culture shock is very real, and that is where the alienation happens. And if you don't get culture shock, that means you have gone into a host of very, very tolerant people. We want to say that our country is tolerant, but it's not. And that is the topic of today. Excellent. And yeah. practice not. Would anyone like to respond And to that? Maman Sahib told us so well that
See, it's not bragged. It is what he told us, and very, very, very welcome as the conclusion of today's sharings. Yeah, okay, so I don't know how much time we have for questions. We could take one, no. We have to. I want to thank the Sahitya Academy especially for not only inviting me, but for giving me the privilege of interacting with all of you. So thank you very much. And I think something to take home about UNMESH. I mean, isn't that about raising consciousness? It's, yeah. Thank you so much for this wonderful session. बहुत बहुत आभार आदरणीय महेश दत्तानी साहब का। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अभी चूंकि कोई टी ब्रेक है नहीं तो आप बैठे। ऑनरेबल गवर्नर साहब आने वाले हैं, विद इन 10-12 मिनट्स ही विल बी हियर। तो आप सभी बैठें और उसके साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे उस सेशन को जिसमें हम भक्ति साहित्य को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, भारतीय भक्ति साहित्य के बारे में। बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेशन होगा जिसमें बहुत ही देश के प्रख्यात विद्वान, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो उसमें हिस्सा ले रही हैं गवर्नर साहब के साथ साथ। अभी के लिए महेश दत्तानी जी का आभार, अंजला महर्षि जी, अस्कर वजाहत साहब, डॉक्टर आतिमजीत, विजय कुमार शतपति जी, देवाशीष मजुमदार जी और आदरणीय बामन केंद्र जी का बहुत बहुत आभार। इस सत्र में बहुत रोचक प्रेरक ढंग से उन्होंने हमें चिंतन के बहुत सारे नए बिंदु दिए हैं, समझ के, विजडम के नए सारे बिंदु मिले हैं। इन सभी का बहुत बहुत आभार। निवेदन आपसे ये करूँगा कि आप सभी अपने स्थान पर ही बैठें, विराजें और अगले सत्र में अपनी उपस्थिति से उसकी गरिमा भी बढ़ाएं। धन्यवाद आप सभी का।